Like कितने लोग हैं आज भी उनको बोलूंगा ना, अरे जिंदगी में 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है. Like you've done it now and somebody might have done it at 17, right? Half of your age as well. But अच्छा यहाँ पे एक interesting चीज that I want to tell you guys is, लोग है ना पैसा कमाने के लिए ना पैसे पे फोकस करते हैं. पैसा कमाने के लिए अपने आप पे फोकस करो. It's a skill. So the interesting pattern that I've picked up from you, which I think is a very natural pattern, is skills. जब आपके पास होते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उससे रिलेशनशिप्स बनते हैं. रिलेशनशिप से यू कन्वर्ट इनटू योर नेटवर्क. Right, and that network leads to more opportunities. So it's like a positive loop. Yes, it will. That loop will also grow its, its web as well. Absolutely. तो I think यहाँ से श्रेय का ऐसे हो गया कि that gave you a trajectory of expanding, because जो last 3 साल में तुमने धूम मचाया है उसका उसकी start यहाँ से हुई है. Like I think if you did not do sales, that would be a pivotal point कि तो इतने सारे स्किल्स डेवलप ही नहीं होते ना. रिलेशंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ सेलिंग समथिंग, कॉन्फिडेंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस ऑफ मैनेजिंग पीपल, एक्सपोजर ऑफ अ न्यू कंट्री. आई थिंक एक बंदी जो चंडीगढ़ से आ रही है, लाइक अ वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एक एनवायरनमेंट जो इतना एक्सपोजर नहीं देता है, टू गोइंग टू सिंगापुर, टू सेलिंग, टू नोइंग कि मैं कर सकती हूँ. Crazy, right? So you focused on your skills. That is a key takeaway. You focused on skill. You focused on building relationship. You focused on the right things. Rather than being obsessed कि यार मुझे कमाना है. बोलने से नहीं होता ना. It's like you need to focus on the right things. So let's resume. You are at 27. You are earning around, I think, 1.5 to 2 lakhs a month. Yes. Around 1.5 lakhs. Yeah, around 1.5 lakhs. ठीक है. Let's go ahead now. Yes, I think I also want to focus on one key takeaway during this phase that I got is like you can be two kind of people, or you can be a mix as well, which is generalist and specialist. Oh. Okay. So I understood that being generalist, I think I benefit more from that, and it can be a choice or it can be something that you just realize about yourself. Interesting. But yes, for me being a generalist, I think that has worked out the best because I learned it somewhere that you can grow a T-shaped graph for yourself. Oh, very interesting. Yes, approach. so you can be like you can know a little bit about everything, and then you go in depth for the thing that you really need to do. So, for example, like sales. At that point in time, I understood the industry. Okay, this is how softwares are developed. I'd done a little bit of coding as well, and I understood how the team works. I know how to talk to team as well. So I knew a little bit of HR too. But I needed to go in depth into sales back then. So I took up some books, I took up some courses, and just self-taught myself sales. Yeah. Right. And then after that, after this job, I was almost leaving this job, and COVID also happened. I ventured into entrepreneurship, and I also started freelancing. Nice. So at this point in time, like freelancing, I think I was able to sell my own skills, my own expertise, right? My own time to clients. And back then I did not even know that this is called freelancing because clients approached me and I was like, okay, fine, we can work together. And we understood, what kind of term, what I can give to the company and what they want as a package from me. And I had to take up different roles because again it was like a solopreneur I would say very small team back then. And then from there I understood that this thing is called perhaps freelancing. Okay, how do I make sure that I'm on the right terms? You make a contract, you give them an invoice based on the hours you work, etc. So that thing started during COVID period. And getting into entrepreneurship as well, I think that also helped me a lot because I had got a lot of confidence already working with a lot of entrepreneurs in my previous 3 jobs. And from there I could also work on my own startup which was into education technology. And this is all like 28? This is still in 27? This is 27, 28, yes. End of the year. Okay. And I think if you realize like it's not linear. Right, it's like this. Yeah. So something interesting that I picked up. So पहले क्या किया पता है श्रेया ने अपने लिए एविडेंस क्रिएट किया कि she can do this. एविडेंस से कॉन्फिडेंस आता है. Right, you build the evidence of handling people, of selling. तो ऐसा था कि ठीक है ये पता है, it's not अनजान. You know the market rates now. You know कि अगर मेरी कमीशन 5% थी, 10% थी, तो ये प्रोडक्ट किसने में जा रहा है? You have the understanding of it. So you were sort of a generalist, but you knew कि इस सेक्टर में क्या चल रहा है. Right? Then you sort of, I would say, became a specialist into that one niche when you started linear it down कि ठीक है ये चीज को मैं sell कर सकती हूँ as a skill, and then people started approaching you कि Shreya, you have already done this for us. Why don't you do this directly for us? Exactly, right? exactly. Why go like this, right? And cut down the middlemen and get directly into it. Yeah, yes. And I feel like this is how the life is, right? Opportunities तो आपको सामने से आएंगी जब आप उसके worth हो. And one key
takeaway for all of you guys is you should be able to sell your time in life. उसके बिना आप अमीर नहीं बन सकते. Yes. Right? If you're just employed or just fixed with one thing, one parameter, you will never be able to reach. I think now you started selling your time when you twisted this whole T-shaped graph into like कि अब चलो जो भी उसको बोलो freelancing, remote work, whatever you say, it's selling your time. आज अमिताभ बच्चन जैसा पेटीएम पे अपनी आवाज दे रहे हैं, अपना समय बचा रहे हैं ना. He sold his like 2 minutes of his life for crores. Oh, right? yes. I think the epitome of being successful in life is being able to just be present in the room and you are getting money for it. Like I don't know. Yeah, that is so. I think I want to get to that later. What I'm doing right now, I want to cover that as well, and how you can scale that up, like जो एक वो exponential graph होता है ना, कैसे ऐसे चलता है और एकदम से ऐसे चला जाता है. So before we go there, मुझे ये पूछना है कि now you're 27, you are ending this thing, like you have shifted from Chandigarh to your IT job to now becoming a LinkedIn पे clients आ गए, you started selling. What was the amount till now total? जैसे 27 तक आ गए हम, were we close to 1 crore here? No. Nowhere close. I think not till 20. I think around 50-60 तो हो गया होगा. हाँ, 60 70 तक था. Then again, then I have a secret what happened. Nice. Last के 3 साल में 1.5 करोड़. Nice. ये सारा पैसा सेव होकर जा रहा था म्यूचुअल फंड्स में. Nice. तो मेरे एक्सपेंसेस इतनी ज्यादा ड्रास्टिकली इंक्रीज नहीं हुए मेरी सैलरी के साथ साथ. They were still like in control. I still have a simple lifestyle. I spend a lot on travel, but I don't spend much on I cannot spend on materialistic stuff because I travel a lot, so I cannot carry it with me. बट मेरा ये सारा पैसा सब कुछ म्यूचुअल फंड्स में जा रहा था, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन इट वाज लाइक आई पुट अ लंप सम quite a good amount into mutual funds when it was at like a super low. Can you disclose the amount if you're comfortable? I think I had invested like 25 to 30 lakhs already by this time. Okay. Yes. I think more than that. नहीं होता उसमें तक. हाँ, more than that. Okay. और फिर जब वो उठा 2021 में, बस वो ऑलमोस्ट वो लगा लो डबल हो गया वो. Okay. So this was a big hike for you because you were smart कि ठीक है ये तो मेरे को वैसे भी लग नहीं रहा. I think this is what I have learned from a lot of people who are rich is they live below their requirement and earn more than their requirement. तो वो एक गैप क्रिएट हो जाता है. वो गैप बना के रखना चाहिए. अगर आपका वेल्थ गोल है, स्पेशली मेरा नहीं था, बट स्टिल आई ended up doing that. बट अगर स्पेशली इफ योर लाइफ गोल इज टू क्रिएट वेल्थ, देन keep that gap because it's needed. It can give you some buffer to take risks. Being rich versus being wealthy is very different. Like आप Lamborghini में घूम रहे हो बट आपके पास घर नहीं है उसको पार्क करने के लिए. Like it's like ऊपर से ये और चल रहा है उसका. So it's just fancy thing for somebody to like a toy कि आप दिखाने के लिए आपके पास में है, बट किसी को नहीं पता भाई ये तो बंदा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है. So nice. Let's resume कि this was a big hike. So you like I think you came close to 70-80 around that thing. मतलब close to 1 crore till 28 का first quarter started. हाँ, तब तक हो गया था 1 crore. Okay. So यहाँ से क्या transition हुआ फिर? यहाँ से ये ट्रांजिशन होता है कि मैंने फ्रीलांसिंग, जब मुझे समझ में आ गया था कि अच्छा फ्रीलांसिंग को एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम भी बनाया जा सकता है, देन दैट्स व्हेन आई साइंड अप ऑन अपवर्क and I got more proactive even on LinkedIn as well. So you went all in into all in, yes. Got it. तो उस टाइम पर मेरे पास एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस भी था, ठीक है, विच ऑफ कोर्स ठीक है वो एक टैग की तरह मैंने कभी यूज नहीं किया, बट उससे इतना कुछ सीखने को मिला दैट आई अंडरस्टूड वेयर एंटरप्रेन्योर्स स्ट्रगल एंड वेयर आई कैन हेल्प देम. So as a consultant now, beyond sales, beyond just project management, I ventured into product management. And product management is like, I think it's a well-paying niche. And you cannot start there as a fresher. I don't recommend that. But if you are a little, maybe 2-3 years into IT already, then it's an amazing role to pick up. Got it. So that's when I think management का एक unlock किया. एक तो management जिसके अंदर individual contributor से उठकर तुम team को manage कर रहे हो, ठीक है, और तुम पूरे प्रोडक्ट की सक्सेस को भी मैनेज कर रहे हो. सो द क्लाइंट्स यूज्ड टू ट्रस्ट मी दैट आई मेक द डिसीजंस फॉर द प्रोडक्ट मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट द कस्टमर्स वुड वांट, व्हिच इज वेरी क्रूशियल रोल. यस, इट इज. सो आई थिंक आई गॉट द कॉन्फिडेंस ऑल्सो टू डू इट. अगर कुछ साल पहले मैं सेम चीज करती, मुझ में कॉन्फिडेंस ना होता क्योंकि मुझे आता ही नहीं था वो चीज. मुझे नहीं पता थी कि क्या लेना चाहिए, क्या. So I think it just happened at the right time, the realization also, and knowing these roles exist, and being out there, keeping your senses open all the time, talking to people, talking to peers as well, कि क्या चल रहा है, आप कितना मांगते हो इसके लिए, ये सब चीजें भी जानना जरूरी है. हाँ, मार्केट स्टडी तो होनी चाहिए यार. So I think it's considered ऐसे टाबू की तरह कि अपनी सैलरी मत डिस्कस करो किसी के साथ. I think I'm sitting here and sharing everything, like keeping. यहाँ पे तो हम पूरे 10 साल डिस्कस कर रहे हैं.
तो ये जरूरी है कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में, आपकी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर इंपॉर्टेंट लेट से अगर वो जेनेरिक भी है तो आप उसको कैसे पैकेज कर सकते हो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सो दैट द क्लाइंट सेज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. For example, when I was reaching out to a client on Upwork itself, and that was an edtech solopreneur, ठीक है, और उसमें क्या था कि वो जो क्लाइंट था ना वो इस चीज में मुझे लगा कि स्ट्रगल कर रहा था कि उसकी डोमेन को कोई समझ नहीं रहा था. रोल तो उसको बहुत लोग मिल रहे थे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या प्रोडक्ट मैनेजर के लिए. But how I pitched was like, I have done something in education technology. I'm very passionate about it. I can help you in this. This is where I see you are struggling. So I can give value there. And he was like, okay, you just understand what I want. So he was ready to settle on the terms of payment as well because he knew what he's getting from me, what he wanted, right? So अगर उनको मिल रही है वो चीज़ तो they will be willing to pay if they have that money. So it's important to learn, okay, where these clients hang out, where your skills, whatever skills you're selling, where those skills are required. For example, अगर आप वीडियो एडिटर हो और आप वर्टिकल वीडियोस के स्पेसिफिक लेट्स से आप एडिटर हो, एक तो पहले नीश अपना बनाओ, वो अच्छा रहता है, वो आपको ज्यादा पे करता है. एंड देन हैंग आउट एट द प्लेसेस वेयर दोस पीपल आर, वेयर योर क्लाइंट्स नेटवर्क बेसिकली. या तो टाइम मत वेस्ट करो रैंडम जगहों पर, ठीक है. कि उसने तो अपवर्क पे किया था, अपवर्क पे आपको हो सकता है वीडियो एडिटिंग के गिग्स ना मिले, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर. तो अंडरस्टैंड वेयर योर क्लाइंट्स वुड बी हैंगिंग आउट. दे कुड इवन बी इन, लाइक आई शेयर दिस ऑल्सो अलॉट, दैट दे कुड ऑल्सो बी इन स्लैक कम्युनिटीज, दे कुड ऑल्सो बी इन सम नीश प्लेटफॉर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, तो आपको Behance और Dribbble इन प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए. We met on Ankur Warik's course. Yes, see, like exactly. Like, it still feels like crazy meeting Shreya on that thing. And sitting here. And sitting here, or she's a very dear friend now. Like I don't know how many times we have interacted and like shared a lot of, like we had literally, मतलब podcast से बड़े तो हमारे calls होते हैं. तो like that is how like close we have come into this thing, because we are going through a journey which is very similar, and sort of I think the struggles are also very similar for the path. Yeah. Right, so I think it would be very crazy to say कि आप एक बार कोशिश करके देखो. You don't know which opportunity comes your way. Very like still mind-boggling. So I have picked up some things from here that I would like to pause and discuss. पता है एक चीज जो मेरे को बड़ी प्यारी लगी ना, is understanding pain points of people. ठीक है, so when you can like वो था ना जहाँ पे उनको दर्द करा, exactly if you can pick it up ना, they will be like, आप बस कर दो, आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, हम दे देंगे. बिल्कुल, आप ये कर दो. एम्पैथी भी होती है, एंड दे नो कि इसको एक्सप्लेन नहीं करना है यार. मतलब मेरी क्या दिक्कत है, मेरे को एक्सप्लेन नहीं करना इस चीज को. यू ऑलरेडी नो, एंड व्हेन यू ऑलरेडी नो, the person is already convinced that if he understands me this well, I am sure he can solve the problem. I think that is where you became unique for a lot of people, and that is where you started earning a lot more than. अरे होता है ना, पोटेंशियल आपका एक ब्रेक होता है, आपके माइंडसेट में एक ब्रेक होता है. अरे इतना कोई पैसा दे सकता है क्या मुझे? क्यों दे रहा है? You have to ask, right? You have to ask, yes. But also you have to realize first that you can. Like कितने लोग हैं आज भी उनको बोलूंगा ना, अरे जिंदगी में 1 करोड़ कमाना बहुत मुश्किल है. Like you've done it now, and somebody might have done it at 70, right? Half of your age as well, but. It's just that you need to be crazy enough to believe it. Like we are doing this podcast, we are trying to give you guys an exact roadmap, but करना तो आप ही को है. We cannot do that. हम आपको रेसिपी दे सकते हैं, बनाना आपको पड़ेगा. Yeah. See, for you it was sort of realizing कि you know IT में आना जरूरी है, फिजिक्स से, वहाँ से इंटरनेशनल जाना जरूरी है, इंटरनेशनल से खुद का करना ज्यादा जरूरी है. कमीशन में भी कितना ही कमा लूंगी. Like you were earning good, but you were like ठीक है यार, पोटेंशियल तो ज्यादा है. बट नाउ यू सी द पैटर्न हियर, यहाँ पे ना एक बार एक लेवल ब्रेक हो रहा है श्रेया के दिमाग में कि यार ये हो सकता है तो ये भी क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है तो ये भी क्यों नहीं हो सकता. इट्स लाइक यू आर रियलाइजिंग कि ओके ठीक है, 1.5 तो कमा लिया, मेरी वर्थ है. 2 कमा लिया, मेरी वर्थ है. 2.5 कमा लिया, मेरी, अरे है यार. मांग के देखो और उनको वैल्यू देकर देखो, मिलेगा. एंड यू स्टार्ट टू जस्ट स्केल इट. आई थिंक देयर आर 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. वंस यू रियलाइज कि ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, make it scalable. Yes. Everything that is not scalable is not worth doing. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.